Maheen Shah. Hello Maheen, assalamu alaikum. How are you feeling today? Hello Shahzad, walaikum assalam. I'm good, thank you. How are you? Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to Pleasure. have you. Excited for the series? I think really excited, and that too, when it's Australia, so it does Exactly. not really matter who the opponent is. Yes. You certainly love watching what the Australians can actually do, and that too in their home conditions. To speak about it further, and that gentleman who's actually done phenomenally well against Australians himself, ladies and gentlemen, the prodigy, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Alaikum salam. Good morning. Good morning. Thank you so much for joining us. Really very fresh for this hour of the day. Full of energy. Mashallah. Shoaib bhai, how do you see, 3 one-day internationals against Australia, 3 T20s? Let's start off with the selection of the team. I think it was perfect, and मुझे लगा कि they made a wise decisions. Okay. They took their best fast bowling attacks, and at the same time, I really think that कि Pakistan is out there to compete, not to lose. क्या बात है? My hunch, I think as a cricketer, I think they be geared up for 10 overs, and the fast bowling has to do with the business, and at the same time, I really think the test of the Pakistan team is going to be the batting. If they show a bit of a character, then I think Pakistan has a chance. Pakistan has a window to win the whole series. I mean, far-fetched सोच है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम कर लेगी. अच्छा शोएब भाई, 2 तब्दीलियां हमने बड़ी जो रिसेंट हाल में देखी, और वो एक तब्दीली में तो गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल हमारे कोच थे, इस्तीफा देकर चले गए. उसके बाद मोहम्मद रिजवान को जो है वो वनडे का कप्तान बनाया गया, T20 का भी कप्तान बनाया गया अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी. तो उसका वैसे देखना है कि शायद जो वनडेज हम अब खेलने जा रहे हैं या जो हम आगे खेलेंगे, आई थिंक वी प्रिपेयरिंग आवर सेटिंग अप आवर टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं. Yeah, I think management decisions हैं. I don't think that Gary Kristen was looking for. Actually, was looking for कि center contract मेरी मर्जी दी जाए. ठीक है. I don't think he was in a favor of Rizwan being a captain. I reckon, उनको वो माहौल ठीक नहीं लगा. प्लस उनकी स्टेटमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से लगा कि उनकी बन नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. So I think it's a sad scenario. Look, I don't enjoy this kind of thing that people are getting sacked or they're leaving. It's not good for a country reputation. I'll be honest with you. And हमारे neighboring countries से भी कुछ messages आए हैं कि उन्हें पता लगा. But that's not the way it is. I think हमने टेस्ट सीरीज जीती भी थी और टेस्ट सीरीज जीती है without him, right? So I think we've done well, didn't we? एक और चीज़, I think the way that Gillespie supported the team और after the win, hopefully वो एक positivity का factor होगा. Obviously team different है, squad different है, तो कहीं ना कहीं, and also him being an Australian, तो उनको वो थोड़ा सा added advantage आपको लगता है होगा if he is the coach for this series? I think दो चीज़ें हो सकती हैं कि one, then he knows what kind of surface that you're playing. Yeah. Secondly, he knows कि पाकिस्तान टीम की weaknesses in the batting क्या है. ठीक. Plus, what is defendable target? अगर ये कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे पकड़ा जा सकता है. सही. I think Gillespie can be a really great help in terms of जो mindset ऑस्ट्रेलियंस का वो पाकिस्तान टीम को बता सकता है ये ऐसे खेलते हैं, आपने ऐसे खेलना है. ठीक. वो आपके साथ बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आके ओवर पावर करते हैं दूसरी टीमों को. ओवर पावर का मतलब ये होता है कि आके आपको डरा देते हैं एकदम और आपके 2-3 विकेट नहीं और एकदम आप थोड़ा सा स्नब करने की कोशिश. स्नबिंग इज द राइट वर्ड. आई थिंक इफ Gillespie एबल्स टू टेल द टीम कि यार स्नब्ड नहीं होना और इनको वैसे ही जवाब देना जैसे तुम्हें देना चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड जो ये दे देना इनको, तो मैच ऑन हो जाएगा. मेरे ख्याल में पीपल नॉट गोना एग्री काइंड ऑफ द स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव. आई थिंक मुझे लगता है पाकिस्तान इवन स्टीवन टीम है ऑस्ट्रेलिया के. True. कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही ज़्यादा कोई आपको गिराएगी या आपको इस तरह करेगा. थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा दें और थोड़ी सी आप बैटिंग में इनको ज़रा ओवर पावर करने की कोशिश करें तो कोई ऐसी बात नहीं है.
एग्जैक्टली एंड इन एडिशन टू दिस ऑब्वियसली हम इसके बाद मजीद भी बात करना चाहते हैं उनके कुछ खिलाड़ी हैं जो शायद पैटर्निटी लीव पर है। पैट कमिंस जो है वो सिर्फ 2 मैचेस में फीचर करेंगे, 3 में नहीं करेंगे। तो जरा सबसे पहले स्केड्यूल पे और टीम्स के ऊपर नजर डालते हैं। हाँ जी, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द स्केड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। 4th of November 2024, the first ODI at the MCG, the Melbourne Cricket Ground, and उसके बाद 8 नवंबर को जो है वो दूसरा वनडे इंटरनेशनल और 10 नवंबर को तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। जी माहीन, उसके बाद T20s के बारे में आप क्यों नहीं बताती? जी, so Thursday 14th November is when the T20 matches start. The first one is in Brisbane at 1 p.m. followed by the second one on the 16th of November, and then the final one on Monday 18th of November at 1 p.m. Excitement. Wow, exactly. And in addition to this, the schedule of the prodigy over here, he'll be joining us all the way from New York. Inshallah, we're looking forward to that. Yes. Let's move on towards the... Just imagine that, you know, I'm just looking at the schedule, you know, Perth, Hobart, Brisbane, all of my favorite places that I played there. Yeah. What a great country. I think it's a beautiful country. When it comes to the crowd, I think they're even more amazing when you bowl against or in front of them. You know, मज़ा आता है। तो I think मेलबर्न का ये है कि मेलबर्न में ड्रॉप इन पिचेस होती हैं। जी। प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन मेलबर्न ऑलवेज बिहेव्स वेल। एंड आई थिंक पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, मुझे लगता है फ्रेश लेग्स ऑफ द फास्ट बॉलर्स इज गोना डू द ट्रिक। द फ्रेश लेग्स ऑफ द बैट्समैन, दे नीड्स टू डू समथिंग। All they have to do is just remember this. 350 होना ऑस्ट्रेलिया से नहीं चेज होना। अगर हमने पहले से तय कर लिया टॉस जीत के हम बल्लेबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक लुक, ऑस्ट्रेलियंस माइंडसेट उनका बड़ा खतरनाक होता है। वो डरते किसी से नहीं है, वो आते हैं अटैक करते रहते हैं अटैक। सो आई थिंक द ओनली स्ट्रेटजी इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज हैज टू बी टेकिंग विकेट। इट इज नो अदर ऑप्शन। वो कोई भी आएगा आपको डराएगा, कोई भी आएगा, वो उनका कल्चर है। उस बड़े कंपैरेटिव लोग होते हैं। वो कंपैरेटिव इसलिए होते हैं बिकॉज दे वांटेड टू मेक दिस गेम लुक गुड एट द सेम टाइम बाय प्लेइंग हार्ड। सो आई रेकन आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ सिनेरियो फॉर पाकिस्तान एंड इवन टफर सिनेरियो फॉर बाबर आजम। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई थिंक ये देखना बड़ा जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, यू नो, हेड टू हेड जब भी आमने सामने हुए तो कौन कितनी दफा हावी रहा है, किसने कितनी दफा इंटिमिडेट वो ना दिखाओ। नहीं, हम आपको कॉन्फिडेंस नहीं नीचे गिरने देंगे। सो लेट्स गो। आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज 108, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 70 जीता है, हम 38 जीते हैं। Well, I think it's just close to 50% of what we have played. Then obviously no result, 3 tied, 1 home win, 37 Australia, wow. Pakistan 6 only, away win 7 Australia, 17 Pakistan. This is something which I wanted to talk about. कि अब पाकिस्तान अवे खेल रहा है। अवे जब आपकी बात करते हो अवे तो कहाँ अवे? दुबई। हाँ, तो बस हमारा होम ग्राउंड। I think the wins are wins, right? Records are records. Yeah. And then obviously neutral win. बड़ा easy to say that, forget all of this. No, we can't forget all of this. Yeah. हमने बड़ी मार खाई थी। इसमें आप सब लोगों का तस्करा ना सब बस में, which is why now let's move on towards Pakistan squad as well and then towards playing 11 because playing 11 भी अनाउंस हो गई है। स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। शोएब भाई ने माहिन शुरू में ही जिक्र किया कि बड़ा बैलेंस लग रहा है। प्लीज गो अहेड, टेक बिल्कुल। अस सो मोहम्मद रिजवान, this is his first stint as a captain, then Abdullah Shafiq, Babar Azam makes a comeback, Hasibullah Khan, Irfan Khan, Saim Ayub, Amir Jamal, Salman Agha, कामरान गुलाम, अरफात मिनहास, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह and शाहीन शाह अफरीदी. Exactly. So Naseem comes in, Shaheen Shah Afridi comes in, Haris Rauf comes in as well, Faisal Akram, Arafat Minhas, and then Kamran Ghulam. I think Kamran Ghulam जब हम अभी टेस्ट की बात करते तो बाबर को रिप्लेस करके आए थे। बाबर going to come in. बहुत लंबे तवील दौरानिये में हमने वनडे इंटरनेशनल खेला नहीं है। हाँ। सिर्फ पाकिस्तान कब खेला था हमने यहाँ पर। आई थिंक स्ट्रेंथन जो करेगा मिडिल ऑर्डर को कामरान गुलाम करेगा। आई थिंक सुभान अली आगा। नहीं आप इतना दूर ना जाएं क्योंकि वो तो बोनस है, एडेड बोनस है ना। कामरान बेसिकली स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इसका। ठीक। ये बेसिकली आपके जो मिडिल ऑर्डर, आप किस नंबर पे खेलेगा? बिल्कुल। That is also important. Important question. और 5वें पे मेरे ख्याल है ये छठे। 5वें पे अगेन देन ही इज गोना प्ले रन बॉल। He has to. He has no choice. अगर आपने चेज करना है या अगर आपने 240 करना है या 275 करना है, then 200 से 75 तक ही इज गोना बी द की। ठीक।
So I think that, that's a great addition, but it's too much to ask from a youngster. Look, in nowadays and age, you're getting paid for it, and you got to be professional. Yeah, exactly. Which is why let's move on ऑस्ट्रेलिया के towards स्क्वाड की तरफ भी Australia. देखते कि उनका स्क्वाड क्या है. So Jack Fraser, Josh Inglis, Marnus Labuschagne, Matthew Short, Stephen Smith, Sean Abbott, Cooper Connelly, Aaron Hardy, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Pat Cummins, Josh Hazelwood, Mitchell Stark and Adam Zampa. Yeah, I think it's great, because Jake Fraser जो है इन्होंने अभी हाल ही में डेब्यू किया सिर्फ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक ही मैच खेला, 41 रन बनाए थे. उसके बाद मिचेल मार्श नहीं खेल रहे, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे. आई थिंक ये शायद नहीं, the venom in the bowling is there ना. बॉलिंग सारी है उनके पास. वेनम वो पूरा है ना, जहाँ से पकड़ना उन्होंने हमें, वो वेनम पूरा है ना. Exactly. I mean, I think it's I'm not going to say a decline of his career, Mitchell Stark, but he's still there with the in-swinger जो करते हैं new balls. That's going to be a bit scary. But I don't know. It's not Gabba. Gabba is like Brisbane. Okay. Yeah. You been there? No, I haven't been there. Okay, that's why you don't know where's Gabba is. So I think Gabba नहीं है. Gabba होता तो मैं थोड़ा सा hesitant होता, क्योंकि Gabba में विकेटें थोड़ा misbehave करते हैं. Yeah. नहीं हिलते नहीं, misbehave करते हैं. Right. वो शेन वॉटसन मेरा फेमस बाउंसर है, यार, गैबा में बदतमीज विकेटें. जो वो वॉटसन हटा था, वो एक्चुअली ना वो स्पंजी बाउंस है. वो लगता है मुंह की तरफ चढ़ता है, तेज. मुंह की तरफ चढ़ता है, फिर वो फ्लाई करता रहता है पीछे. फिर वैसे भी टोटल ज़्यादा था. मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया सारी आउट मैंने कर ली है, 5 आउट हुए हैं, तो शो ऑफ ही कर लेते हैं. तो मैंने फिर वजीफा ही नहीं, आउट करो इसको, ये बंद करो ये काम, बहुत हो गया. तो मैं पेस दिखा. बट द थिंग इज मेलबर्न ऐसा बिहेव नहीं करता. आई होप ही डजंट. लुक एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन्स in Australia. Yeah, exactly. We'll come back to this as well. We've got the playing 11s ready for everybody out there as well. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. When we come back, ladies and gentlemen, game's still on. Ladies and gentlemen, welcome back. The Pakistan versus Australia series begins literally in a few moments from now on. So हम बात कर रहे थे प्लेइंग 11 के हवाले से, हमने पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के हवाले से बात की, टीम में जो चेंजेस हुई, कोचेस में जो चेंजेस हुई, ये सब इन पे हम डिस्कशन कर चुके. अब थोड़ा सा बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 है कि वो किस तरह से लग रहे हैं, हु ऑल आर दे प्लेइंग टुडे. सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑस्ट्रेलियाज प्लेइंग 11 फर्स्ट एंड देन विल कंटिन्यू द डिस्कशन. Exactly. So looking at the playing 11, I think जब अभी हमने स्क्वाड के ऊपर बात की, उसके अंदर से जो 11 उन्होंने चुने अभी आज खिलाने के लिए, starts from Matt Short, Jake Fraser. Obviously, looking forward to Jake Fraser's innings today. There is Stephen Smith, Josh Inglis, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell. Maxwell की मेरे ख्याल से आपको वो innings याद ही होगी. अफगानिस्तान के अगेंस्ट. Exactly. Then Aaron Hardy, Pat Cummins, Sean Abbott, Mitchell Stark, and Adam Zampa. So I think what we really need to kind of consider over here is that Josh Hazelwood's not playing today. So it's Adam Zampa, Mitchell Stark, Sean Abbott, and well, I think it's for Mr. Shoaib Akhtar to let us know what do he see in this playing 11. Pat Cummins, Mitchell Stark, Sean Abbott bowling करता, और you have I think cut for role playing 11 है ये. हाँ. कि ऐसा नहीं है कि जी हम बीच में किसी और के पास चले जाएंगे, अगर बॉलिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम इससे करा लेंगे. कट फॉर रोल प्लेइंग 11 है ये बस. I'm forgetting this guy's name. I don't know. एरन हार्डी? नहीं, another one. एरन हार्डी तो खिलाया है ना. कैसे निकल गया जहन में यार, अभी नाम लिया था. और बैट्स एंड बॉल, बैट एंड बॉल एट द सेम टाइम, ऑलराउंडर. जॉश हेजलवुड की बात? नहीं. स्लो आर्म, मीडियम पेस, एंड बैट्स एज वेल. स्लो आर्म, मीडियम पेस. पड़ गया ना मुसीबत में. चलो बार I thought he would have been in there. चलो, anyways, I think Sean Abbott can bowl. And I think good enough fast bowling. I think Glenn Maxwell bowling भी करेगा. So I think इनके 50 ओवर पूरे हैं अपने in between. और अर्ली टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली चूंकि जेक फ्रेजर का मैंने भी जैसे मैट शॉट को मैंने देखा नहीं, फ्रेजर को मैंने नहीं देखा, बट आई थिंक स्टीवन स्मिथ इज देयर. इंग्लिश मैंने देखा हुआ है, लबुशेन, मैक्सवेल, पैट कमिंस तक तो आप समझे बैटिंग के 7-8 होता है, सारे कर लेते हैं बैटिंग. Even Mitchell Stark can bat. Zampa can bat. But the thing is, it's going to be, look, everybody knows that's going to be a tough series. Everybody knows it's going to be a test of Pakistan.
cricket and the cricketers at the same time. मुझे All लगता right, है ladies and gentlemen, let's take you for toss and we'll see which team is going to choose bat or ball. And the news from MCG is that Pat Cummins have won the toss and they have opted to ball first, which means कि पाकिस्तान कप में जो हमने वनडे इंटरनेशनल वनडेज की प्रैक्टिस की है उसमें गालबन किसी टीम से 35 से 40 ओवर से ज्यादा नहीं खेला गया था. मैं ये कहना नहीं चाहता, but it looks like as if Australia might pack us in 35 to 40 overs and they're going to go for it. नहीं assumptions ठीक है आपकी, but the thing is पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइनअप है. Obviously, the dangerous thing is that it's a fresh new drop in pitch. Obvious था कि इस fresh wicket के ऊपर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग ही करे, तो पाकिस्तान भी बॉलिंग करना चाहता था. But the thing is, it's going to be tough. Let's put it this way. Let's think about it. If I was the coach, I would say, yeah, let's play the 50 overs. ठीक, that's the aim. Let's play 50 overs. Well, first thing first, I don't mind you getting around 50 runs in 15 overs. It doesn't matter. Imagine breaking that confidence of Australian that not giving their wickets away. How's that for a change? बिल्कुल. You know, that is going to be the first nail in the coffin. And then the rest, I think what they should do is, I think then they try to play under the average of 3, 3.5, 4. That is fine with me. But when you try to be sneaky in the late overs and last circle, I mean, you can grab some runs in late 35 overs में. True. It can be done, by the way. It can be done. वहाँ से आपके 35 या 60 भी हो सकते हैं. Look, that is the morale जो इनका जो boost होगा, जो ऑस्ट्रेलियन देख रहे हैं, मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ कि आके अटैक करो और विकेटें ले लो. विकेट लेने से पाकिस्तान प्रेशर. Imagine not losing the wickets in the first circle. Not losing a one wicket, it's going to be half of the battle won. The rest उनको पता है यार अब टोटल इनका काम करना है पाकिस्तान का. That's going to be a challenge for Pakistan. Exactly, and then for us, for our ballers to kind of go and restrict it as well. If I'm not wrong, I think you can correct me as well कि जो भी वर्ल्ड कप में हमने ड्रॉप इन पिचेस देखी थी यूएस में, वो शायद ऑस्ट्रेलिया में प्रिपेयर नहीं वो यूएस है यार. यहाँ पे ये ड्रॉप इन पिचेस कोई 15-20 साल से कर रहे हैं. और अब ओवरकास्ट कंडीशंस भी लग रही है, 2 बजे ने दोपहर के. मेलबर्न it's a very tricky city when it comes to a weather. Okay. So मेरे सारे ऑपरेशन ही यहीं पे हुए हैं घुटनों के. So MCG is a very very scenic cricket ground. Enjoy that scenario first of all. Have fun. It's a great day to be out. I don't think it's going to be huge numbers going to be turning out on the. अभी लग भी नहीं रहे थे, काफी खाली लग रहा था. But you know, enjoy this. And it's not going to be very enjoyable for the batsman. But the thing is, hanging in there, I think it's at times जो पाकिस्तान अच्छा कर सकता है by hanging in there. Hanging in there. And that's all I want to see. And while they're hanging in there, single double के ऊपर please जरा focus बड़ा जरूरी है. जरा पाकिस्तान की playing 11 इसी मौके पे आप सबके सामने रखना चाहता हूँ. हाँ जी, पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो आज MCG में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेंगे? अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम 5वां नंबर, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, नियाजी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ and मोहम्मद हसनैन. So we're playing 2 pacey bowlers against Australia. Then there's Naseem Shah as well. 3, yes, and then Shaheen Shah Afridi. 4. Yeah. नहीं मतलब अगर हम हारिस रऊफ they have pace यार. Hasnain has pace, Rauf has pace, Naseem has pace, Shaheen has pace. But Hasnain and Haris at times lose their line. But the thing is now, look यार देखो the two, I probably would say the 2 clueless opening batsmen. That don't need to have a clue about this track. True. I think the best for Saim Ayub and Abdullah Shafiq is just you know, unorthodox चीजें जो करते हैं वो करो. उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कहता बॉल लग भी जाएगा आपको चेस्ट पे, सीने पे, इट्स ओके. मेरा ख्याल में अगर साइम अगर ये ट्रिक कर जाए कि यार बेटा अपनी मर्जी करो, खेलो, इट्स ओके, इट्स ओके. मुझे नहीं लगता साइम रोकने वाला है. और अगर उसके 23-30 हो जाए वो भी ठीक नहीं है. अगर 23-50 हो गया ना, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. एग्जैक्टली. और इसी के साथ सर जरा मैं ना कुछ प्लेयर्स की हमने एवरेजेस भी निकाली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो अपने टॉप 5 बैटर्स के ऊपर नजर डालते हैं who can do well. Fakhar obviously is not in the squad or the playing 11, but Babar Azam ने 10 मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 606 रन बनाए हैं.
67 रन की एवरेज है, एंड वी सर्टनली विश हिम बेस्ट ऑफ लक एज वेल। इमाम नहीं खेल रहे जी, 8 मैचेस में 484 रन है, उनकी भी एवरेज 69 है, ये अच्छी एवरेज है वनडे में। मोहम्मद रिजवान की एवरेज है लिटिल ऑन द लोअर साइड, 14 मैचेस में 361। फखर नहीं खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने एक ही मैच खेला, 64 रन बनाए और 64 की एवरेज रही। देखो यार, अल्टीमेटली देखो ना, इसमें से 2 लड़के खेल रहे हैं, रिजवान और शफीक बस। अब बाबर देखो ना, 10 मैचेस में 600 रन किए। अब मसला ये कि if you get exposed early on to the newer ball, you see that is going to be a huge challenge for him. यहाँ पे वो फंसेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे फंसेगा नहीं ना, वो 2 तरह से फंसा हुआ है। You know, he's been out of the test squad as a punishment. अब यहाँ पे I wouldn't say that, you know, कि उसको ये प्रेशर ना चाहते हुए भी होगा। उसके बाद अगर मैं जल्दी आउट होता हूँ 2 टेस्ट में, 3 वनडेज में अगर खातिर खा मैं चीज़ नहीं करता, तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एट द सेम टाइम कि बाबर हैंग्स अराउंड। बट शोएब भाई, जहाँ पे आपने अलॉन्ग विद कामरान गुलाम, बता रहा हूँ अभी पार्टनरशिप बड़ी क्रूशियल होगी आपके लिए, बता रहा हूँ। ऑब्वियसली क्रूशियल होगी। जहाँ पे आपने बाबर की बात की है कि जी वो नई बॉल पे अगर आ गए, इसका मतलब है कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर यार, यहाँ पे सईद अनवर फेल हो गए, आमर फेल हो गए हैं, यहाँ पे इंजमाम फेल हो गए हैं। तो देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कोई मजाक नहीं है यार। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बैट्समैन हमारे जाते हैं ना, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट गेट यूज्ड टू द बाउंस। बाउंस होता है मुंह के सामने, लगता है कि मैं उसको ड्राइव खेल सकता हूँ, नहीं ड्राइव खेल सकता हूँ। तो जिस तरह हाफ कमिटेड करता है बाबर, तो वो ऑब्वियसली ये लगती नहीं। बेसिकली द मंत्रा ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया इज टू स्टे ऑन द बैक फुट, स्टे ऑन द बैक फुट, स्टे ऑन द बैक फुट। बहुत ही मुंह में आया तो चलाओ, अदरवाइज गेट रेडी फॉर द कट। और जो बॉल आगे से निकल रहा है, तो आई थिंक लीविंग द बॉल वुडंट बी अ बैड आइडिया। It wouldn't be a bad idea to understand, but I'm not going to say that for Saim and Abdullah. Abdullah is going to be more prone towards this outswing. Exactly. अब अभी एक और बात जो हमने गौर से सुनी, जो वसीम भाई अभी वार्नर के साथ और गिलक्रिस्ट के साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि I will make sure that with a newer ball I do not give them space outside off stump or anything on leg. You need to pitch it up. You know, you don't have to know कि कौन सी swing करनी है हमने as a bowler. You have to know one thing is that are good areas, which is this, and plus let the ball do the talking. Exactly. और अब हम अगर MCG की बात करते हैं, Pakistan's batting first, what do you think will be a good total for us to restrict Australia while they're chasing? I think 270, I think, and 75 is going to be a good total. Pakistan कप में अभी हमने कोशिश की थी. I think, look, we gotta set the bar up ना यार. You're gonna, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ यार, अपनी औकात से थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए. मैं जब घर भी खरीदता था तो मैं सोचता था यार ये महंगा है, लेकिन थोड़ी अपनी औकात से ज़्यादा खरीदना चाहिए. चादर जितनी उतने पाँव नहीं, थोड़े से ज़्यादा फैलाने चाहिए. अच्छा, इसमें एक और चीज़, ऐसी कोई बात नहीं है. Why you so getting negative in the morning? I'm not. मुझे जो ये लग रहा है जब आपको लग रहा है तो आप अब देखें, बात ये है कि we need to back them up. Be positive. I am. We need to back them up. You know, the positivity that I'm going to take out from here is कि अगर हम जो अभी हाल ही में हमने यहाँ पाकिस्तान कप खेला, बेशक उसमें चेस नहीं हो सका, लेकिन टीम्स बैटिंग फर्स्ट have done tremendously well. तो मुझे ये लगता है कि पैट कमिंस का ये फैसला कि हम पहले बॉल करते हैं, I think Pakistan to bat first is a great idea too. It's a win-win for both the teams. We're going to have to see that. We're going to have to see that. यार अब positivity. We're going to have to see that because we don't know drop-in का moisture है ना, because drop-in का खुदा होता है. यहाँ पे AFL होता है, फुटबॉल होता है यहाँ पे. अभी AFL का सीजन खत्म हुआ है. अब वहाँ ड्रॉप-इन पिचेस ये ला के रख दी जाती हैं, ये से डाली जाती हैं ऊपर. फिर उनको जेलिन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है. उन्होंने तकरीबन about 3-4 days ago, I think you've seen the pictures. The drop-in गिरा रहे थे. ये 5-6-7 दिन हो गए उसको. फिर भी मॉइस्ट होता है. अब मॉइस्ट का मसला ये है कि वो एक्चुअली हेल्प करता है सीम थ्रो. दूसरा, मेलबर्न का मौसम, उसमें सूरज सनी, क्लाउडी, विंडी, सनी, क्लाउडी. वो सेटल होता है 12 के बाद. 12, 2, 3, 4 लॉन्गर डेज हैं. इक्वेटर से नीचे हैं ये लोग, कि हमारे यहाँ ठंड, वहाँ गर्मी होती है, उल्टा हिसाब चलता है. बट वो थोड़ा विकेट थोड़ा सेटल हो जाता है, थोड़ा सीम काम हो जाता है, थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है.
सो थोड़ा मैनेजेबल हो जाए, तो इसलिए बैट्स उन्होंने किया। Yeah. ये मैनेजेबल नहीं होना था शाहीन शाह अफरीदीन से अगर ये बॉलिंग पहले करते पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली इट्स गोना बी अ टफ डे फॉर पाकिस्तान, बट आई रियली होपफुल कि 250 टारगेट रखे, 25-30 अगर मिल जाते हैं ऊपर, दैट्स गोना बी अ वेरी वेरी एडिशनल प्रेशर। बट पाकिस्तान शुड नॉट बी कोलैप्स्ड। कोलैप्स की तरफ मत जाएं, कोलैप्स ना करें। बैटिंग में कोलैप्स इट्स गोना बी क्रिएट अ लॉट ऑफ मैस। तो विकेट ना दे, खैर कोई बात नहीं यार। I'll take 40 runs in 10 overs. I'll take 45 runs in 15 overs. I'll Possible, take that. yeah. With one wicket down, I'll take that. मेरे लिए तो hypothetical scenario 35 for 10 overs, no wicket loss. I think मैं आधी तो बैटल वहीं जीत गया। Alright. एक प्लेयर है जो कि ऑब्वियसली एमसीजी में काफी खेल चुके हैं, हारिस रऊफ, वो बिग बैश खेल चुके हैं। मुझे उनसे थोड़ी सी उम्मीद है, होपफुली आज वो थोड़ा बेहतर लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कराएंगे। तो काफी अरसे से हमें उनकी वो फॉर्म नहीं नजर आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो आपको लगता है वो इफेक्टिव हो सकते हैं आज? अगेन उसके लिए भी टेस्ट है, बाबर के लिए भी टेस्ट है, दोनों के लिए टेस्ट है। जस्ट गो आउट देयर एंड मेक श्योर दैट you do the right thing. What is the right thing is the bowling in the right areas. Don't look for the spells. Spells नहीं मिलते यहाँ पे windows मिलती हैं। ठीक। अगर if you're hitting the deck in the right areas and then you see the opportunity, then go for the kill. And kill which is कि मैं और यहाँ से लूँ। But remember this, Australian bog down नहीं होते आपसे। वो ये नहीं कि आप एक विकेट दे देंगे तो आपके बॉग डाउन हो जाएंगे। हाँ, तेज 2 विकेटें गिरना या तेज एक स्पेल में 3 विकेटें गिरना 3 ओवर्स में, obviously it's gonna put them on the back foot. But having said that, हारिस का टेस्ट यही है to concede less runs. Yeah. Make sure ball in the right area, but I'm not saying that कि तुम विकेटें लेने ना जाओ। मैं ये नहीं कह रहा, but stop conceding so many runs. Okay. Yeah. Because it's not good for your confidence. And plus, with the change of captaincy, I really think that is gonna help him. सही। क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसको, जब मुझे नहीं लगता कि उसको जब बॉलिंग कर रहा था तो वो थोड़ा इतना कंफर्टेबल जोन में था। आई एम श्योर इसका होम ग्राउंड है, इसको पिच का पता है, इसको बाउंस का पता है, इसको लेंथ का पता है। आई एम श्योर he needs to make a good comeback. Thank you so much, Shoaib, for being with us. Lovely to be in conversation with you, and thank you so much, Mahi. Thank you, Shahzad. Always wonderful to be around these amazing people. But for everybody who's out there, ladies and gentlemen, I think what we really need to kind of talk about over here is, and I think that's something which I would actually kind of refer to Maheen over here is, I think it's the right mindset that we really need to kind of bring in while we are actually on the pitch too as well. And not just that, I think मुझे ये लगता है कि वो जो हम, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 3-2 उनकी विक्ट्री रही, और जो जिस तरह इंग्लैंड का खेलने का तरीका, दैट्स नॉट व्हाट ऑस्ट्रेलिया डू। ऑस्ट्रेलिया विल ऑलवेज अप्लाई देमसेल्व्स। सो हाउ डू यू सी देम? शहजाद, आज मुझे लगता है एक और सबसे बड़ा टेस्ट मोहम्मद रिजवान का भी है, क्योंकि उनका पहला गेम है एज अ कैप्टन। सो ऑब्वियसली द वे ही स्ट्रेटेजाइजेस एवरीथिंग, वो किस तरह से प्लेयर्स को खिलाते हैं आज। सो जहां पे बाबर और हारिस और इन सब का टेस्ट, आई थिंक सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्ली मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वो जब हम स्किपर्स इनिंग की बात करते हैं तो सर्टनली शायद मेरे ख्याल है स्वीप शॉट्स तो शोएब भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी रिजवान के लिए। दान तोड़वाने यही तो इसीलिए स्वीप शिप नहीं होती, स्वीप यहाँ हो सकता है बस। वहाँ स्वीप शिप नहीं होता, वहाँ पे आप ये तैयार रहो। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ चैलेंज फॉर अ न्यू कैप्टन। आई थिंक देखो यार, हार्ड मोमेंट्स ही आपको अच्छा बड़ा इंसान बनाते हैं। आई थिंक रिजवान के लिए भी टेस्ट है, सारे भी टेस्ट है, सारे टेस्ट पे ही गए हैं जी। है वनडे गए हुए टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन गए वनडे पे हुए हैं। Yeah. सो आई थिंक रिजवान का भी टेस्ट है कि एज ए कैप्टनसी यार कि प्रोलॉन्ग कर सकता है। देखें, इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम हुए हैं रिजवान की कैप्टनसी की वजह से। He has to go out there and prove himself that I'm worthy of the captaincy. Yeah. That is a big part. And the way he captains the team, the way he sets team, the way he sets the fielding, किस अप्रोच से खेलता है, कह देना बहुत आसान है, हम दुनिया की तरह नहीं खेलेंगे। नहीं, उनका ध्यान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने भी जो ऑब्वियसली टॉस पर जो उन्होंने कहा जी जिस तरह दुनिया खेलती है हम आज वैसा नहीं खेलेंगे। भाई तो फिर आप कैसा खेलेंगे? नहीं, बट तो कह रहा है कि शायद हम एग्रेसिव खेलेंगे। हाँ, वो ये कह रहा है। बट एग्रेसिव इज नॉट आवर टाइप ना। हम वो रन अप बॉल से भी जाते हैं। वो तो वो कह रहा है ना, कप्तान कह रहा है कि जी मेरी सोच है कि मैं एग्रेसिव खेलूंगा। आई थिंक ही विल प्रोबब्ली गिव अ लाइसेंस टू साइम अयूब। गो आउट देयर, हैव फन।
बट वी विल सर्टनली नीड विकेट ना. 50 ओवर्स है, हमें पता है कि हम पैकअप हो जाते हैं 30, 35, 40 ओवर्स के अंदर. यू नो वी नीड समबडी हु प्लेज अ सेंसिबल इनिंग. देखो वो तो खेलने के लिए आपके पास कामरान गुलाम है, बाबर के पास है. बहुत लंबा टाइम होगा. गो आउट देयर, स्टे देयर, हैंग इन देयर. Thank you so much, Shoaib, for being with us. Thank you so much, Thank you, Mahir, and Shoaib. for everybody who's out there, ladies and gentlemen. We'll take you to MCG, where the first one-day international between Pakistan and Australia is set to take place. Australia has won the toss, and they're going to bowl first. Until next time, look after yourselves. We'll see you at the post-match of Game On. Game On. Game on. Allah Hafiz.